हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। आज का जो टुडेज लेक्चर वी आर बेसिकली डिस्कस रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में वी आर बेसिकली डिस्कस and also we are basically discuss some important point, that means the fractions of incident energy that is reflected here or the fractions of fractions that is transmitted ET के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ER क्या था बेसिकली? ER हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। ER इक्वल्स टू ER इक्वल्स टू बेसिकली था RC upon whole square, and RC is the reflections coefficient. Okay, reflections coefficient, and ET the fraction that is transmitted, and it's equals to ER. That means E equals to 1 minus RC whole square. ओके, अगले लेक्चर में हम लोग इस दोनों के ऊपर एक छोटा सा हम लोग आइडिया लिए थे, और आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट। दैट मीन्स व्हेन रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव एंड व्हाई रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, इसका कॉज क्या है, और अगर रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव देन इसका रिजल्ट क्या है। बेसिकली इसका पॉजिटिव होने, अगर पॉजिटिव हो गया उसका रिजल्ट बेसिकली क्या मिलने वाला, इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, एज वेल एज if reflection coefficient is negative, and why reflection coefficient is negative, also we can also discuss about here what is the interpretation of negative reflection coefficient. ठीक है, so some significance of reflection coefficient, heading डाल लो significance of reflection coefficient, significance of reflection coefficient, significance of reflections coefficient. Okay, significance of reflections coefficient. What is the reflections coefficient? Reflections coefficient RC, it's equals to basically A or amplitude of reflected wave, that is A1 upon A0, that is amplitude of incident wave, and that it's equals to Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2, and that is equals to rho 1 alpha 1 minus rho 2 alpha 2 upon rho 1 alpha 1 plus rho 2 alpha 2, where rho is the density of the medium and alpha is the velocity of P wave, right? Rho क्या था? Density of the medium, density of the medium. Okay, and alpha is the velocity of P wave in this medium, ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग बेसिकली इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किए थे। आज है टुडेस क्लास वी बेसिकली डिस्कस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट। ठीक है, रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चार्ट के फॉर्म में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इफ व्हेन reflections coefficient is positive, okay, when reflections coefficient is positive, इसका कॉज क्या है, रिजल्ट क्या है, इसके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाई रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, बेसिकली कॉज। ठीक है, कॉज को हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाई रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, बेसिकली द इंसिडेंट वेव reflected from the surface, right, and that reflected wave is recorded at a recording point.
So if the incident wave is reflected at the surface of a medium with a higher seismic impedance, that means causes क्या है बेसिकली देखो, दो मीडियम है, we take two mediums, right? This is the medium interface and this is the medium 1, this is the medium 1 and this is the medium 2. Okay, and this medium have density rho 2 and this medium have a density rho 1. Okay, if the seismic wave is coming from a medium 1 and interact with an interact incident on this interface, this is the interface, this is the interface. Okay, this is the interface. If the incident wave is incident on this interface and this interface and this wave reflected back to the medium 1 via medium 2, right? Via medium 2, and the impedance of medium 1 is Z1 and impedance of medium 2 is Z2. If impedance of medium 2 is greater than compared to the impedance of medium 1, then we get basically negative reflections coefficient. So when basically reflections coefficient is negative, reflections coefficient is negative और पॉजिटिव, इस दोनों के बारे में हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सो थोड़ा सा ये वाला फॉर्मूला Z2 था, राइट? नॉट Z1, Z2 minus Z1 और Z1 plus Z2, रो 2 अल्फा 2 रो 1 अल्फा 1. ओके, सो वेरी गुड. सो इफ कॉज इज द इंसिडेंट, हम लोग कॉज को डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली द इंसिडेंट OF इज रिफ्लेक्टेड, है ना? इंसिडेंट OF इज रिफ्लेक्टेड at the surface of a medium with higher seismic impedance, हम लोग पढ़ाई किए हैं इम्पीडेंस के बारे में, seismic impedance, right? That is a cause है, that is Z2 is greater than Z1, then we get basically reflections coefficient is positive. Okay, reflections coefficient is positive. अगर reflection coefficient is positive, then what happened? रिजल्ट क्या है और इंटरप्रिटेशन क्या है? बेसिकली इसको रिजल्ट लिखो. रिजल्ट क्या? रिजल्ट बेसिकली हम लोगों को मिलने वाला है अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, देन रिफ्लेक्टेड वेव इज इन फेज विद द इंसिडेंट वेव. ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हम लोग को पॉजिटिव मिला है ना, देन द रिफ्लेक्टेड वेव इज इन फेज विद द इंसिडेंट वेव. इट्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. The reflected wave is in phase with the incident wave. Okay, it's a very good concept. So रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव के दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए
what we can basically find out the reflections coefficient. Okay, next, if reflex when reflections coefficient is negative, सेकंड केस को हम लोग देखेंगे. सेकंड केस, when reflections coefficient is negative. reflections coefficient कब नेगेटिव होगा? when Z1 is greater than compared to Z2, है ना. सो कॉस क्या है इसका? कॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नेगेटिव क्यों हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली कॉस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले. कॉस क्या है? द वेव इज इंसिडेंट ऑन ए medium with seismic impedance बेसिकली क्या होगा? Z1 is greater than compared to Z2, है ना. Z1 क्या था? फर्स्ट मीडियम का इम्पीडेंस, और Z2 बेसिकली सेकेंड मीडियम का इम्पीडेंस. देन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव. सो अगर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हुआ, देन द रिफ्लेक्टेड वेव इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इंसिडेंट वेव, है ना. 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द इंसिडेंट वेव. सो वी कैन फाइंड आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग स्टडी किया. रिजल्ट क्या होने वाला है? बेसिकली देखो, रिजल्ट जो हो रहा है, द रिफ्लेक्टेड वेव इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 180 डिग्री out of phase with the incident wave, right? with the incident wave. ठीक है, 180 degree out of phase with the incident wave. These are the most important to significant of reflection coefficient. Positive हो, अगर reflection coefficient is positive, then what happened? And अगर reflection coefficient is negative, then what happened? These two important concepts are very important in UPSC prelims exam point of view. Okay, अब देखो, हम लोगों को दोनों सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग स्टडी किया. ठीक है, हम लोग दोनों इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस के बारे में स्टडी किया ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में. वही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था बेसिकली? वो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बेसिकली क्या है, उसको आप लोग नोट करके लिखो. हम लोग पढ़ाई किया, जितना भी पढ़ाई किया उससे कुछ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहा है, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग बेसिकली समराइज करने वाले हैं. ठीक है, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग बेसिकली समराइज करने वाले हैं. नोट करके एक पॉइंट लिखो, इम्पॉर्टेंट है. द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन इंटरफेस इज the fraction of energy reflected from an interface is equal to RC upon RC whole square. It's a one type of concept. And second point is that means the fraction of energy reflected from interface it does not depend on whether the incident is from the medium of higher or lower seismic impedance.
ओके, दैट मीन्स अब देखो, ये जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बेसिकली रिफ्लेक्टेड हो रहा है फ्रॉम द इंटरफेस, इट्स इक्वल्स टू reflections coefficients का whole square. So that means does not depends the incident wave reflected from another medium and interface does not depend of the interface and the interface between the two medium. That means does not depend on the impedance of these two medium, है ना. Reflection energy, the fraction of energy reflected from the interface is equals to RC square. That means that energy does not depend on the how does not depend on the seismic impedance. That means impedance is low or high, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, राइट. so does not depends on whether the incidence is from the medium of higher or low seismic impedance. Higher or lower seismic impedance. Okay, that not depends on. It's a very important concept. This is the very important concept. This is the very important concept. Okay, हम लोग रिफ्लेक्शंस कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशंस कोएफिशिएंट के बारे में आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया. नेक्स्ट we are discuss some two important questions regarding UPSC GEOScientist course. UPSC GEOScientist course. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग UPSC GEOScientist कोर्स के ऊपर डिपेंड करके बेस्ड करके हम लोग बेसिकली 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है.